Hello, guys. Welcome to the live stream, and we are here on. This is not the live I was doing from last 2 3 days. Today we are going to give contest 177. Oh, this is a problem. I need to. Oh my god. Okay. We cannot show questions, so maybe I need to put scaling, render, delay, chroma key, color correction. What's the time? 7:58. Let's register. फटाफट से. But can I? I don't know. Color is here. Select color opacity. Not making any changes. Or maybe I just can add a sharpness and decrease the sharpness. यार इस पे एक ब्लेंड तो लगाना पड़ेगा. Apply that chroma key color correction. Do you guys know how do I apply? I don't know. Let's leave for the time being, and let me just open the 59. Let's register for this contest. Got it. Just gonna start YouTube Studio. Maybe I just can join now. What the fuck? थोड़ा तो ये लैगी होगा. तब तक मैं हो गया आज का तो हो गया तो हो गया जी आज का. क्यों नहीं ओपन हो रहा है ये? भाई मत करो यार आज प्लीज. आज बहुत मन से बैठा हूँ ये मैं कॉन्टेस्ट देने. प्लीज जस्ट देखो नेट तो सही चल रहा है. देयर इज नो एनी इशू विथ माय नेट. सो नेट इज गुड. Just need to load this. Yeah. Smallest pair with different frequencies. You are given an integer nums. Consider all pairs of distinct x and y from nums such that x is less than y. X, y have different frequencies in nums. Among all such pairs, choose the pair with the smallest possible value of x. If multiple pairs have the same x, choose the one with the smallest possible value of y. Return an integer array xy if no valid pair. So the smallest value is 1 with frequency 2, and the smallest value greater than 1 has different frequency from 1 is 3 with a frequency of 1. Thus the answer is. So पहले तो फटाफट से let's just nums of length is 100. Maybe we can like हाँ ठीक है. Dirt ठीक है. Set st no map ना. Map taking int for int map for int x and nums chill out map of x plus plus. So what we are doing is we just calculating the frequency, right? So we'll get the smallest x. So the answer is what? In vector, or maybe like int for first equals
No, just vector. Oh my god, why I'm panicking? Oh my god, int ans and then इसका मिनिमम 1 तो रहने वाला है, ठीक है. सो व्हाट इफ वी हैव ओनली 1? बस 1 है तो ये तो हो ही नहीं पाएगा. ठीक है. इफ nums dot size is is equal to 1, then just return this is not possible, right? देखते हैं फिर अभी. अब नहीं फॉर ऑटो it in map, ठीक है. this map, so vector ans if ans dot size, ठीक है. then you need the smallest y, right? Smallest value of 1 with frequency 2 and the smallest value, so I need 1. Okay, so an ordered set, so frequency wise sort करना है. ये तो चक्कर हो गया. मे बी पेयर मार के सॉर्ट कर देते हैं, वो ज़्यादा इजी होता. हाँ यार. मे बी how do I sort? This will give me what? ChatGPT, let's ChatGPT. I want the sorting based on the frequency, not value, which is बहुत लोग कर दिए होंगे इसको. Sort by frequency, use set. Set a custom operator, the pair bool operator comparator. You set pair int comparator st. Yeah, we can use this, but how do we frequency and not for frequency problems? Vector pair intent array frequency dot begin frequency dot end sort. We can do like this. और चिल आउट. देखो मेरा क्या तो थॉट प्रोसेस है कि सबके फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है. फिर लोएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला मुझे मिल जाएगा, ठीक है. सो आफ्टर डूइंग दिस आई नीड अ वेक्टर ऑफ टाइप पेयर ऑफ पेयर. सॉरी इफ समवन इज ऑन दी हैप्पी कोडिंग. या ब्रो, thank you. Int comma int, and then we can just like ans which will have map dot begin से लेके map dot end. Cool. And then I can just like maybe we also need a comparator, we'll see. So for auto it in this temporary tmp if ns dot not अगर empty dot
ans dot empty, if ans dot empty, okay, ans dot size equals 0, in that case it dot second, क्योंकि लोएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला है तो जस्ट पुट द सेकंड वन. ठीक है, this would be ans dot push back dot second, else if the frequency matches. ठीक है, if ans dot back equals it dot first. ठीक है, ठीक है, फिर an dot 8. ठीक है, क्या हो सकता है, पहले अलग होगा तो पहला पुश कर देगा, उसके बाद अब क्या हुआ, पहला पुश कर दिया फिर आया, अब ans डॉट बैक इज इक्वल टू इट डॉट फर्स्ट हो गया. ठीक है, देन ns डॉट पुश, अगर अगर फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 2 2, सो 2 इसकी भी मैच होगी, 2 की इसकी भी मैच होगी. If multiple pairs have the same x, then choose one with the smallest value of y. Choose pair with the smallest possible value of. Consider all distinct pair. So but then it should, मैं गलत केस ही ले रहा हूँ. मान ले ऐसा है, 5 5 5 5 2 2, तो it will have 4 comma 5 and then it will have 2 comma 2. So if I pick 5 then I pick 2, तो 5 comma 2 नहीं होना चाहिए ना. The frequency of value x is the number of time it occurs. Again, consider all pairs of distinct values x and y. So I calculated x and y. X and y different frequencies. So पहले फ्रिक्वेंसी का मैंने डाल दिया. ठीक है, छी भाई, मैं मतलब if I'm taking this much time just for a easy question, I don't think I am gonna score anything. Previous equals -1. Let's do this. ठीक है, previous frequency is it dot first. ठीक है, if answer dot back is equal to previous, such that x and y are different frequencies ना, तो even answer dot back is not equal to frequency previous, just answer dot push dot 8 second. ठीक है, and if answer dot size equals to return
just break this and then return ans. Let's just try unordered map of int comma int. Why do we need? I can like use unordered here. Unordered map of int comma f. So ans f ans dot size. मैंने बहुत इसमें जूते आप करें but it's fine. If previous and previous equals it dot first. चिल आउट 1,1 आ रहा है आउटपुट. छी 1,3 आना चाहिए. इसमें भी 1,1, इसमें -1,1. ये तो ठीक है बट इसमें 1,1 क्यों आ रहा है? मैप एमपी डॉट बिगिन एमपी डॉट 1,1 क्यों आ रहा है? That's the question. It is sorting. I don't know. Maybe like sort temp dot begin. Say temp dot end. Oh my god, such a bad at coding. Just 1 comma. This is, how is this even possible? For auto it and temp see out. Just want to know it not first. Guys, I think कोई ना it not second. कितना टाइम लग रहा भाई? इट्स अ इजी क्वेश्चन. और क्या मैं कर सकता हूँ? सोचो. Maybe I just sort everything and after sorting I just pick the first element. Return and if no the return an integer smallest possible value of x. So x is that number. बट प्रॉब्लम ये है कि उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे x सबसे छोटा होना चाहिए ना. Does not matter what's the frequency. I just sort it and then calculate the, oh my god, ordered map is enough. So choose the pair with the smallest possible x. ठीक है. If multiple pairs have the same x, consider all distinct values of x and y for nums such that x is less than y. X and y have different frequencies in num. X should be the smallest. So ordered map would be enough. ठीक है. Ordered map में 1 के 2 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा. If multiple pairs have same x. If multiple pairs have same x. Choose the one with the smallest possible value of y. By shittiest question I have ever seen. Return the x and y. So it does not matter what the frequency is. You only care about the smallest value is 1 with frequency of 2.
and the smallest value greater than. हाँ, तो आंसर ordered map int ये दिया after this. Oh my god, for I auto it on map, ठीक है, whoever is the smallest value, ठीक है, ans dot if ans dot size equals 0, ans dot push back it dot first, ठीक है, and at the same time prev pre oh my god previous equals let's say 0, ठीक है, and at the same time when I'll push the first one I'll say कि previous equals it dot second. Now I just need to find an element which is whose frequency is greater than, ठीक है, if अब if it dot second, now you are finding, ठीक है, and the smallest value greater than 1. If ठीक है, if now the smallest value known to the smallest greater than 1 that has different frequency is 3 with a frequency of 1. So if ठीक है, the smallest value if it dot first is greater than it ns dot back, ठीक है, and ns dot size is less than no is less than 2, ठीक है, and it dot second should not equal to previous. In that case you do, so I want to find a number, ठीक है, and return as, let's just try this, ordered map int or oh, why do we need ordered, just map 1 3, then we have 1, why do we have this, both have the same frequencies so no pair. इसके बाद let's say not is equal to 1. Now if answer dot size is not equal to 2, then ये सब करने के बाद then you just return -1 comma -1. Yeah, we can also return this because I think 1 comma 3 -1 comma 1 -1 comma 1. Let's test one more case when let's say this is 2 and 2 comma 2 comma 3 comma 3 comma 1. So 2 comma 2 comma क्या आना चाहिए, 2 comma 2 is 2, 3 comma 3 is 2. Cool. So sorted है, x is the smallest. Let's just submit. I think it's good. I think yeah, accepted. What's my ranking? Oh my god, people have solved. मैं distract हो गया सही में. Let's just solve second question and we are done because we are already at 29,000 rank. Oh my god, भाई साहब, it took us how many 23 minutes to solve it. Seriously, हाँ 22.
You are given a string S consisting of lower letters and an integer k. Two equal characters in current string S are considered close if the distance between their two equal characters in the current string S are considered close if the distance between their indices is at most k. Cool. When two characters are close, the right one merges into the left. Merges happen one at a time, and after each merge, the string updates until no more merges are possible. ठीक है? Return the resulting string after performing all the merges. If multiple merges are possible, always merge the pair with the. If multiple merges are possible, always merge. You are given a string S consisting of lowercase English letters and integer k. Cool. When two characters are close, the right one merges into the left one. So basically, if we have, let's say, A, B, C, A, then this merges into this. So it becomes AB, right? And it should be like equal characters. So one A and A gets merged. So it becomes like, okay, if two equal characters in the current string are considered close if their distance between the distance between their indices is at most k. ठीक है. When two characters are close, the right one merges into the left one. So this A is vanished. Merges happen one at a time, and after each merge, let's say, the string updates until no merges are possible. So which one, like the right one merges into the left one. So right one को basically हटा देना है. We discard it. The resulting all possible. Return the resulting string after performing all possible merges. If multiple merges are possible, always merge the pair with the smallest left index. क्या? If the multiple merges are possible, always merge the pair with the smallest left index. Multiple players share the same. If multiple merges are possible, always merge the pair with the smallest left index. मतलब this one. Like A if can be merged with this and A can be merged with, let's say, this also. In that case, पहले इसको merge करना है. If multiple pairs share the smallest left index, choose the pair with the smallest right index. हाँ तो smallest right index ठीक है. Let's say AA. So A B C A में A and A are close. So we will merge with A के बाद जितने भी A हैं उनको उड़ा देना सीधे सीधे. B के बाद जितने उड़ा देना C के बाद. Y ये उड़ जाएगा. B आ जाएगा. B के बाद कोई भी इसके बगल में अगर दो डिस्टेंस तक आता है उसको उड़ा देना है. Y से Y, this is possible. So we just discard this. Cool. And then we like keep this. But merge करने के बाद भी there is a possibility ना. Z. Just return an empty string for the time being, and I want to know कि for the test case YYZ, let's say I merge YY and then BB है तो BB भी merge होगा कि नहीं. That's what I want to know. अरे बहन का. So merging, it can be like multiple times it can happen. What should be my approach? I should solve this question within like 10, 20 minutes max. Let's try to solve this in 20 minutes. So इस केस में क्या होगा? Y get will merge, then B, then this Y
अब ये वाई वाई बी मर्ज हो गया, वाई वाई बी ये, ठीक है। सॉरी, वाई वाई बी वाई वाई बी जेड, ठीक है। अब ये वाई वाई मर्ज हुआ, तो ये बोल रहा है कि अगर इफ़ वी हैव मल्टीपल मर्जर्स तो फर्स्ट यू विल given to a string. Two equal characters in the current string are considered close if the distance between their indexes is at most k. When two characters are close, the right one merges into the left one. Merges happen one at a time. After each merge, the string updates until no more merges are possible. Return the resulting string after performing all the possible merges. If multiple merges are possible, always merge the pair with the smallest. हाँ वही बोल रहा हूँ, मान लो भाई ये भी मर्ज हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो बोल रहा है कि मर्ज द स्मॉलेस्ट पेयर विद द स्मॉलेस्ट ith लेफ्ट इंडेक्स इफ मल्टीपल पेयर्स शेयर द सेम स्मॉल लेफ्ट इंडेक्स, लेट्स से वी हैव वाई वाई वाई, ठीक है। सो दिस इज अ वैलिड मर्ज and this is also a valid merge. So first we merge this and this. That's what the guy is telling, smallest right index. So you merge this, it becomes y, and then again. Okay, so how are we gonna do it? We are saying we are here, we have a y. Now if I find any y within 2 steps, I'll merge it. So we found a y, we check case ka it's in 2 step, so we basically merge it. We just remove that, maybe we don't include it, right? So it's y, don't include it. Okay, so it remains 2 only. Yeah, but it got merged. Then we have v. So we have b, it has dropped to 1, and b का now अगर कोई 2 आता है तो we'll remove. Then we have yb, then we have a y. So at this point yb, the string is this can be like हर merge के बाद it's the string now. Maybe we can use stack or something. Put everything in. So we saw A then B and A, तो stack में कैसे करोगे अगर ये? So you have A B A, K equals to, you got A, ठीक है, you got B. So how will you merge? ना ये ठीक है, this might work. तो ठीक है ना, ये तो करेगा, y तो मर्ज हो गया, ठीक है। y, we have y here, f2, we have 1, b आया 2 आया, then we have y. Now we have found y when y was 1, so we discard it. ठीक है, then we again find y, we discard it. So sorry, it's still 1 because we have yb. Now we found b, so we just merge it, we discard it, we merge it, so we get y, then we get b. Cool. But this is not mergeable, bro, because when you
when you get y as b, cool, when you get y, so you reduce this to 1 and then you again got y. नहीं होगा ना, this can be merged, y b and then we have b again. अब इसको एक एक स्टेप में करोगे तो कैसे ये बनेगा, y b y y z, फिर again you will merge this, so y b y b z, then you will again merge this, क्योंकि if यहाँ पे multiple merges possible हैं तो you will pick the smallest left index, तो ये merge हो जाएगा, so y b smallest I index, so y b b z, अब ये नहीं होगा, then you go to here, then you merge, so y b z. हाँ, so you find y and you merged, so वो merge अगर हो गया, you don't reduce it, you don't reduce anything if something is getting merged, so y b it is at 1, it is at 2, still 2 में कोई भी आएगा तो we'll eat it, so y, okay, y, we'll just remove it, and we got b is gonna next, so it's gonna merge it, and then we would have z, so z with 2 and you'll add z here. Let's try it on other a a b c a b c a a a b c a a a b c a, ये है ना, k equals टू बोल रहा है, हाँ देखते हैं, so we have a value 2, a ले लिया, we got this merged, ठीक है, then we got b 2, ठीक है, and since we got 2 we'll decrease this to 0, सॉरी गलत कर रहा हूँ मैं, अपना ही लॉजिक गलत कर रहा हूँ, a आया, we have a equals 2, ठीक है, फिर a आया तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू, ठीक है, एंड वी हैव सी आया तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, एंड सी इक्वल्स 2 आ जाएगा. नाउ वी हैव ए बी एंड सी. हाँ तो बी आया तो शुड इंक्रीज टू 2, 2 से 1, एंड देन सी आया तो ये 0. ओ माय गॉड, सॉरी रुक जाओ. We have a equals to a, then we again got a, we discard it, then we got b equals 2, and then we decrease it to 1, and then we got b also, then we got c, so c equals 2, and at that point बाकी सबका जो ये है it's going to decrease to 0 and this also 1. c, we got a, can we survive with a is 0, अगर ये 0 नहीं है तो we'll eat it, else we add it a and we increase the frequency to 2 only. I think it should work. Let's just unordered ns dot length is 100, so it's n into n, and if it is n into n we are going to so we'll be able to solve this, or maybe some. हाँ हर लूप में मेरे को लास्ट तक जाने का नहीं. अब श्रिंक कितना होगा, तो हर बार k तक चलाएगा, एक लूप 100 इंटू k हो गया, फिर वो श्रिंक हुआ, बट श्रिंक करने के बाद भी तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लाइक ए फिर समथिंग, ये नहीं कि ये श्रिंक हो गया फिर ये भी श्रिंक हो गया फिर तुमने मिला दिया, बट वाई इजंट पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल नो. ए बी 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 सी बी बी सी सी, देन वी हैव ए. अगर ये
मर्ज हो गए, छोटे हो गए, फिर वो के में आ गए। वेरिएबल को फाइंड समथिंग, तो क्या, टेक दैट ए ना। अब मुझे कैसे पता कि उसका ट्रैक रखूँगा कि मिल गया है? ये ठीक है, ये मेरा, दिस इज़ गुड, 1 पास है। अनऑर्डर, लेट्स ट्राई अनऑर्डर्ड। रैंकिंग तो कम ही होगी, 14,000 में आ गया मैं। ओ माय गॉड, चलो बस यही करना है। अनओआरडीईआर अनऑर्डर्ड मैप ऑफ टाइप इंट कॉमा इंट, ठीक है। सॉरी, वी आर गोइंग टू कैर int map for the I for char ch in s, ठीक है। just take a string ans equals empty string, ठीक है। now if map, ठीक है, if mp dot count, अगर ये है ही नहीं मैप में sch, then in that case if not exist, if map dot count or map में ch equals 0, in that case or distance has increased, ठीक है। सो मैप में ch डालो विथ वैल्यू k, ठीक है, ans प्लस इक्वल्स ch, एल्स, ठीक है। मैप तो पहला क्या है कि अब मैप में है ही नहीं, ठीक है, या उसकी काउंट 0 हो चुकी है, तो हम वो करेंगे। अदरवाइज इसका क्या मतलब है? अदरवाइज क्या मतलब है कि मैप में दूसरा मतलब क्या हो सकता है? अगर मैप में या तो वो है else is not 0 and it cannot exceed because we are assigning that k, so else केस में that ch is in map और उसकी फ्रिक्वेंसी भी 0 नहीं है, in that case so जब a मैप में था, ठीक है, a कहाँ गया, a b c a, तूने इसको डाला तो a की वैल्यू कर दी तुमने। अगर मैप में नहीं है या उसका फ्रिक्वेंसी 0 हो चुका है, ठीक है, ठीक है, हाँ, नहीं है यार, उस मैप में नहीं है वो एलिमेंट ही। अरे यार, अगर मैप में नहीं है तो जस्ट पुट इट इन दी मैप, ठीक है, ठीक है। अब वो मैप में अगर एग्जिस्ट करता है एंड उसकी फ्रिक्वेंसी 0 नहीं है, दैट मीन्स कि वी आर गोइंग टू मर्ज इट, सो लेट्स जस्ट मर्ज इट। मैप में एग्जिस्ट करता है, उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट, जस्ट वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट, ठीक है। तो मैप में 4 है, डाल दिया, ठीक है। मैप में नहीं है या फ्रिक्वेंसी 0 है तो डाल दिया मैप में a इक्वल्स 4। अब दूसरे पे आया, फिर से इफ इट इज़ इन मैप, सो वी जस्ट मर्ज इट, वी डोंट टेक एनीथिंग। मैप में नहीं है तो डाला,
B with 2 with K, ठीक है, मैप में नहीं डाला C2, now V again K। ओ तो जब मैंने B डाला, इट्स नॉट इन द मैप, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 1 होनी चाहिए थी, और जब C डाला तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी हट के 0 होना चाहिए, तो 1 होनी चाहिए थी। तो कोई जो इसकी फ्रिक्वेंसी इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब मैप में नहीं है या उसकी फ्रिक्वेंसी 0 से 0 है, दैट मीन्स कि इट इज़ नॉट गेटिंग मर्ज्ड। सो बाकी सबकी डिस्टेंस एक एक बढ़ा दूंगा, ठीक है। देन फॉर ऑटो इट, ठीक है, फॉर ऑटो इट एन मैप ऑफ इट डॉट फर्स्ट, ठीक है, माइनस माइनस, जिनका भी उनका फ्रिक्वेंसी सबका कम कर दो। I think it should work, just return ANS. I think it should work. What's my ranking? 15,000. YBZ. YBZ. Crazy. ABC. We got ABC. We got A, B, C, A. We got, let's just give this thing. With K equals 2. Oh, sorry. A, B, 3. Two. I think it should work. ठीक है, it's not my test case. This is YBZ. What's the test case? अगर एक ही बंदा आता है तो, और उसकी लेंथ के भी हो सकता है इक्वल। Even I don't care. Let's just submit and see. It's already IHJI. How? IHJI. तो ये क्या करा? K की वैल्यू क्या है दिखाओ? K की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो I का वैल्यू 1 पड़ा, I आ गया, H पड़ा, H 1 आ गया, ठीक है, तो ये 0 हो गया होगा, ठीक है। ओके, सो is less than equal to, I guess we are there, bro. IHJI. I don't want to get any more. क्या हो सकता है? Let's just give one more. I want to give ABC, ठीक है, and the length is same. ABC and length is 3 only. So गंदा टेस्ट दिया मैंने। A B A C X C सही है, 1 2 3 4 5, जस्ट गिव इट। पेनल्टी ऑलरेडी लग चुकी है, सो A B X आएगा, क्योंकि थिंग विल बी मर्ज्ड, everything will be merged, और A B X ही हो जाएगा। लेट्स जस्ट सबमिट, fingers crossed, let's go. What's my rating now?
Still 15,000? Still 15,000? I don't believe so, bro. I don't believe it. We have now 42 minutes left. If anyone is watching my live stream, I'm sorry. Okay, so no one is watching my live stream, but I don't. I don't care. We're doing good. Let's just do one more question in 42 minutes and we are good to go. Sum of k digit numbers in a range. देख के गान पर क्वेश्चन you I just want to give it a try. You're given 3 LRK. Consider all possible integers consisting of exactly k digits, where each digit chosen independently from the range of L are inclusive. If 0 is included in the range, leading if 0 is included in the range, leading zeros are allowed. It in an representing the sum of all such numbers. Since the answer may be very large, written model. It's a DP question. It's a DP question, but 10 की power 9 हो सकता है. ठीक है. All numbers formed using k equals 2 digits in the range of 1 say 2 is 1 1 1 2 2 1 2 2. It's like binary. So 1 2 3 अगर आता है मेरे पास, so L can be 0 और ये this can be 9 only. ठीक है. L will be less than same हो सकता है like 1 and 1, so the range is like 1 से 1 ही बन सकता है. That's the case. So worst case में ये 0 और 9 आ सकता है. तो using 0 and 9, 0 9, how many numbers you can form? 0 to 9. So 0 to 9 you have 10 places. ठीक है. And for all 10 places you have 10 options. So 10 to the power 10 हो गया ये basically. So you just generate all the numbers. That is not possible. अगर तुमने permutation इस पे लगा दिया तो फट जाएगा ये. Why can't it 10 go to the power 10 numbers हो जाएंगे? And then you want the sum of everything. Just I'll give 2 minutes more. It is sum of all such numbers. So 10 की power 10. That many numbers you're gonna have. Let's say you have 4 to 6. So 4 to 6 में कितने नंबर आ सकते हैं? The numbers you can use is 4 5 6. 3 numbers. 3 नंबर्स के यूज़ करके कितने वो बन सकते हैं? 3 into 2 into 1. So 3 factorial. So number of numbers you have is like 0 अगर आता है और 9 आता है तो you have 0 1 2 10 numbers. So 10 factorial into 9 into 8. तो ये 10 factorial numbers will be there only. So just सारे permutations इसके बना के and sum कर देते हैं. You are 3 and consider all possible integers consisting of k digits, where it is chosen only from the independently. हाँ अरे ये थोड़ी है 10, ये इंडिपेंडेंट लाइक 66 20 1 2 है तो 2 2 भी तो बन सकता है, 1 1 भी तो बन सकता है. तो वही तो बोल रहा हूँ, 4 से 6 में 3 नंबर है टोटल. ठीक है. And in that case you have 3 into 3 into 3 places, which is like 3 to the power 3. You have 3 places. Number of digits 10 है. 10 है तो 10 places हैं. एंड सबको तुम 10 तरीके से 10 की पावर 10, 1 की पावर 1, 10 की पावर 10 आ सकता है. These many numbers you can generate. तो तुम सारे numbers generate कर नहीं सकते because 10 की पावर 10 generate करके then you can iterate and then sum everything up. That's not. Leading zeros are allowed.
I don't care leading zeros are allowed or not. Leading ना, leading zeros. So 2000 ऐसा. I don't know. Return an integer representing the sum of all such numbers. Since the answer may be. So यहाँ पे देखो जैसे L 0 से 1 है. So number of. अच्छा K is the number of places you can have. Exactly K digits. So K digit है. Can have K digits. तो places number of places मैं यहीं तक गलत समझ रहा था. K to the power number of digits allowed. So K can be 10 to the power 9. So let's say 3 places allowed हैं and we have 4, 5, 6, 7, 4. कितने नंबर ऑफ डिजिट्स बनेंगे वो तो मैं बता सकता हूँ. बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. टू इज ओनली वैलिड नंबर कंसिस्टिंग. के की वैल्यू 10 है तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैसे 3 4 5 6 7 8 9. I don't know. 5 is the इसका कुछ तो ट्रिक होगा. We're not going to generate all the numbers and then sum everything up. K की पोजीशन 3 है and we have 0 1. So दो तरीके से भर सकते हैं. तो 2 into 2 into 2 which is 2 की पावर k. 2 to the power 3 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 numbers and we then add it up. k की वैल्यू 10 की पावर 9 है भाई. and 10 की पावर 9 वर्स्ट केस में क्या होगा ये. 10 की पावर 9 places into all 10 values allowed. You cannot generate all numbers and then sum. Or can you? You cannot. So I give up on the second question. We have only 34. You are given an integer now. रैंकिंग अपडेट हुई क्या. 12,000 रैंक है. 10,000 तो आ जाएगा. यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स. एन एरे इज कॉल्ड पैरिटी अल्टरनेटिंग. बाकी चूज इसके. An array is called parity alternating if for every index I where ठीक है less than n minus 1 nums of I and nums of I plus 1 have different parity. One is odd, one is even and another is odd. ये इवन है ये ऑड है. अल्टरनेटिंग है. एक इवन एक ऑड एक इवन एक ऑड होना चाहिए. ये इवन से शुरू कर रहे हो तो ऑड इवन चलना चाहिए. आई और आई हैव डिफरेंट पैरिटी. ये अलग होना चाहिए. ये अलग होना चाहिए. A array is called parity alternating if for every index I where I is like 0 से लेके n minus 1 तक which is n minus 1 से less than है nums of I and nums of I plus 1. ठीक है. we will just check have different parity. इसका अलग है. फिर इसका अलग है. इसका अलग है और इसका बस ये चेक कर लेंगे पैरिटी है कि नहीं. ठीक है. इन वन ऑपरेशन यू में चूज एनी इंडेक्स आई and either increase nums of I by 1 or decrease nums of I by 1. वन ऑपरेशन में यू कैन ये चूज करके इसको बढ़ा सकते हैं. ठीक है. रिटर्न एन इंटीजर एरे आंसर ऑफ लेंथ 2 वेयर
minimum number of operation you require to make the array parity alternating. Cool. Answer is the minimum. Answer 1 is the minimum possible value of max of nums minus minimum of nums taken over all arrays that are parity alternating and can be obtained by performing exactly answer of zero operations. ऐसा नहीं कर सकते ना, सॉर्टिंग विल नॉट वर्क हियर बिकॉज 2 1 2 1 है, अभी ये तो चल ही रहा है, तो ये तो पैरेटिंग है, सॉर्ट कर दे तो दिक्कत हो जाएगा। पहले तो पहला आंसर पूछते हैं, वी जस्ट चेक, ठीक है। 2 minus 3 1 4, so 2 minus 3 is good, minus 3 1 is problematic. Increase nums of 2 which is 1, 2, that's it. Decrease nums of 3 by 1, ये वैल्यू सही है, ये वैल्यू गड़बड़ है, ये पेयर गड़बड़ है। So the moment you found something गड़बड़, ठीक है, ये पेयर गड़बड़ है। तो ये प्रॉब्लम है, एक तो लगेगा इसको फिक्स करने में, यू कैन नॉट। हाँ, अब देखो प्रॉब्लम क्या है, -2 -3 इज राइट and -3 and minus is 1 is गड़बड़। तो if you decrease, if you try to fix this you cannot, because इसके पहले वाले फिर बिगड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये और ये सही है, that's fine, ये और ये सही है, गड़बड़ है, तो इसको बढ़ा दो, फिर ये सही हो जाएगा, फिर आगे ऐसे मैच करते हो। So this is like the number of iterations you would need, just 0 2 is गड़बड़, तो तुम इसको बढ़ा दो, just make it 3, cool, और just increase or decrease, it does not matter। अगर ये 0 से, बस इसको इंक्रीज या डिक्रीज करके 0 के इक्वल नहीं हो जाना चाहिए, दैट्स इट। जस्ट इंक्रीज, यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज। अगर ये और ये इवन है, ये और ये गड़बड़ है, तो मतलब या तो वो ऑड है या तो इवन है, तो बस इंक्रीज बाय 1, मेक इट 3 और लेट्स से मेक इट 1, देन दिस इज वाई the resulting array is the parity alternating and the value of maximum is the minimum number possible among all parity alternatives obtained using one operation। so maybe, तो पहला एलिमेंट है उसको मैं maybe I can just decrease। अब the question is -2 -3, how many time we have -28 minutes, so the question is -2 -3 2 4, -2 -2 -3, and then we have 2 and then 4, तो -2 -3 सही है, ये सही है, ठीक है, छोड़ो, यहाँ आओ, इनको चेक करते हैं, ये गड़बड़ है, सही है। तो द वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि -2 और 4 हो, -4 हो गया लेट्स से, तो somehow try to decrease this, no matter what you do, I don't know, you just try to decrease, so that you always try to decrease first। I just put a number कि -4 को मेरे को decrease and the last one, let's say last one 1 आ जाता है, ठीक है। तो
The max you can get is by increasing. And this is like the first जो तुमने किया है इंक्रीज डिक्रीज, और तुमने जो लास्ट किया है वो बस देख लेते हैं, ठीक है? तो दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ ऑपरेशंस यू नीड टू डू. लेट्स से यू हैव, ये सही है, ये गड़बड़ है, तो एक पेयर गड़बड़ हुआ तो एक काउंट. अगला लेट्स से इसको सही करने में 1 3 3 2, ये सही है, ये सही है, ये गड़बड़ है. 1 एंड देन 4 है, ये सही है, ये गड़बड़ है. तो तुमने इसको फर्स्ट इज 1, तुमने इसको try to decrease it so it becomes 0, then you came here, then you checked, तो सही है. So only one operation is required. And if you, तो मैक्सिमम जो सही है उनको तो तुम डिक्रीज नहीं करोगे, तुम इंक्रीज उन्हीं को करोगे जो गड़बड़ है. एंड द थिंग्स विच यू आर ट्राइंग टू डिक्रीज, तो अब वो नहीं आगे पता, मे बी अ बिगर नंबर एंड देन मे बी अ स्मॉलर नंबर, राइट? सो इफ यू आर ट्राइंग टू जस्ट यू गेट दी ऑल दोस एंड देन ट्राई टू वो कि मेरे को डिक्रीज किसको करना चाहिए था, मेरे को किसको डिक्रीज करना चाहिए था. अगर एक और क्वेश्चन है ना, 0 2 -2, so 0 2 -2 ये गड़बड़ है. तो नाउ यू हैव ऑप्शन टू इंक्रीज और टू डिक्रीज इट, बट विल लेट्स से वी डिक्रीज इट, सो वी डिड इट 1, ठीक है? एंड देन वी गो टू हियर. इट्स लाइक अगर तुम इस 2 को 3 कर देते तो तुम्हारा दिक्कत हो जाता पहला नंबर ऑफ आइटरेशन. सो वॉट एवर यू गेट, लेट्स से फिक्सिंग दिस, फिक्स इट, लेट्स से दिस इज 8, ठीक है? सो नाउ you have first one is your 2 which you decreased, so you got 1, and then now the last one you 8. Now if we have only 1 and that is equal to the send minimum at the same time, ठीक है? Taken all over arrays and that are parity alternating that can be performed by exactly 0. So इस process में what you could have done is you could have increased this 3, would have decreased this. तो अगर मुझे 2 सही करना पड़ रहा है तो या तो मैं, क्या पता मैं दोनों डिक्रीज ही करता और यहाँ पे 3 होता तो यहाँ 8 होता. तो तुम ये सही करते, ये सही करते, 1 करते. अब ये भी गड़बड़ है तो तुम इसको बोलते कि 1 3. सो लेट्स मेक इट, लेट्स से you had 2 here, बोलते 1, say you had 1, यहाँ पे 2 नहीं हो सकता, you have 3 और -3, लेट्स से 3 हो गया. क्या करते, इसको डिक्रीज ही करते ना, यहाँ 2 आता से 7 था, टी मैक्सिमम.
ये थोड़ा सा लाइक for int count equals 0 or ti equals 0 as less than I equals 0 as less than nums dot size. तो अब ये भी तो हो सकता है तो कुछ पहले से मतलब लेट्स से ये 1 था ये 3 था, मैक्स और मिन में का डिफरेंस 0 होना चाहिए, तो तुम यू विल ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज द नंबर यू हैव चेंज्ड. If max or min is belongs to this, now values are distinct. कुछ ऐसा थोड़ी लिखा है. You always try to decrease, maybe that's the like question or INT. Can you decrease the first one? Obviously I can decrease like first one. Let's say this is 9 and this is 1, so decreasing, and this is 1, so decreasing, making 8 and 1 would be greater, no? Or you just 9 and then you just it was 1, so you did 2. ठीक है ना? तो let's go from 0 to nums dot size less than size minus 1 I plus plus. साइज में तो एक लेस किया फिर एक लेस, ठीक है. if nums of I and nums of I plus 1, ठीक है. अगर दोनों इवन है या दोनों ऑड है, nums of I modulus 2 equals 0, so of I is 2 equals 0, ठीक है. और if both are odd, modulus 2 is not equal to 0 and also not equal to 0. In that case, count plus plus. Yeah. So if ठीक है, if nums of I is 0, nums of I plus 1 is also 0, or nums of I not odd नहीं होगा, like this is the case, ठीक है. That case you just increase the count and then just let's say return count, let's say just, so we got 1 here. Ouch. Yeah, if this is the case, then if nums of f, so just decreasing would fix it. अगर दो लोग चीज इवन है तो डिक्रीज करके तो वो वही हो जाएगा. मैं बोल रहा हूँ वर्स्ट केस में क्या होगा कि ये 3
to, मतलब let's say ये दोनों सही थे, let's say this was 3, this was 2, ये दोनों सही हैं। अब इसके आगे कोई भी let's say x आता है और x अगर even है तो I don't care if I increase or if I decrease. No, I care because this should be like y, and y should be like odd 3 or 2. 3 इवन है तो नेक्स्ट ऑड होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। नहीं तो ठीक है ना, पहले इवन है तो इवन दोनों हो गए तो इसको मैं चेंज करता हूँ, ऑड हो गया तो इसको मैं इवन बना दूंगा। यहाँ पे मुझे ऑड चाहिए, एंड इफ दिस इज इवन, this is even, so changing this might would, अगर let's say this is odd, this is also odd, no this is even, ठीक है, और this is odd, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3, फिर then you go to 2, then you go to x, and then you make it like odd, so x minus 1, and then you need to do like y minus 1, right? Else what could you have done कि odd even odd, हाँ तो ठीक है। So no matter like if I do x minus 1, let's say 3, 2, and this is let's say even, and let's say this is odd. So if this is 2, minus 1 would make it equal. कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आगे वाला फक हो जाए। लेट्स से ये इवन होता, ठीक है, और ये इवन को तुमने ऑड कर दिया, ऑड इक्वल हो जाएगा। तो ऑड ऑड इक्वल हो या इवन इवन, यू विल ऑलवेज ट्राई टू डिक्रीज ब्रो। व्हाट्स द पॉइंट? नम्स ऑफ whenever such a case, so you do nums of I plus 1, you do just decrease, ठीक है, and then you will have int min equals int max, int count, ठीक है, mini equals int max, and then maxi equals int min, ठीक है, equals 0। आई डोंट केयर ये सब चेंज करने के बाद। once you do this, you just min equals mini equals mini of maybe increasing the one and decreasing the other, well, because we want to is if they both are like, if they both are different or they both are same, मे बी मैं उनको, अगर मैं उनको डिक्रीज छेड़ता नहीं होता तो कोई मतलब ही नहीं है, बट उनको मैं छेड़ूंगा तो मान लो मैं एक को ही छोड़ रहा हूँ और वो उसको मैं इंक्रीज कर सकता था उसके मैक्स से और मैं डिक्रीज कर सकता था। दैट्स द क्वेश्चन, लाइक इज मिनिमम मिनी एंड नम्स ऑफ mini is like mini is nums of 0 and max is nums of 0, nums of I plus 1, the same would go to maxi max।
So you got 2 and 5. And you got 1 and 1. ठीक है. And you got 0, 0, 1 and 1. So maybe उस point तक I just see कि maybe decreasing, I can increase it or decrease it, and then I just check कि either increasing gives me the maximum value. The first number you decrease and the last number you decrease. बट कोई बीच का भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो है लाइक 3 ये इवन था, ये भी 6 था. ठीक है. Even odd, and then let's say 7, and then odd even odd, तो इसको कर दिया 7. odd even से 1 था तो इसको कर दिया 2. तो मे बी पहला दूसरा जो रेट गया 7 था, अभी तो पहला तूने जो चेंज करा वो लेट से कोई इधर ही था, इसी को तूने चेंज करा 6. लेट से ये 5 था, तूने 6 कर दिया, ये 5 था. तो ऑड ऑड, तो ऑड इवन करा, अब ये 6 था, मैक्सिमम वुड बी 8. तो मे बी यू कैन मेक इट 9 ऑल्सो. So every time you do a thing, you just try to decrease it or maybe increase it, and then you then try to get like, maybe इस 9 को करके मेरे को 7 भी मिल रहा था, इस 9 को करके मेरे को 10 भी मिलता. तो I just want max at 10 and then minimum. I want the mini to be the max to be the mini should be max. 9 मिनट है भाई, क्लिक कर जा दिमाग में, कैसे होगा कैलकुलेट, क्लिक कर जा. Let's say I have to change इसको I can do 7. ठीक है, इसको मैं 7 कर सकता हूँ और इसको मैं 10 कर सकता हूँ. तो अगर मैक्सिम मुझे लेस करना है तो आई जस्ट ट्राई टू गेट की मैक्सिमम इसको क्या कर सकता हूँ. सेम तो होगा नहीं, 7 और 7, मे बी 7 and this is like maybe 2 and then 7 and maybe like 1. ठीक है. कैन देयर बी ए पॉसिबिलिटी जब मैं इसको बड़ा करूँ या इसको छोटा करूँ तो वो मिनिमम बन जाए? हाँ, हो सकता है. अच्छा, ये 11 हो. ठीक है, अब मैं इसको 11 की जगह इसको मैं तो या तो 8 कर सकता हूँ, या तो मैं इसको 9 कुड हैव बिन 9 भी कर देता. 7 ऑड है तो ऑड से +1 करूँगा 8 हो जाएगा, और 6 भी कर सकता हूँ इसको, राइट. एंड देन 6 कर दिया मैंने, लेट्स से. तो ये मेरे ऑड था, ये मैंने ये मेरा ऑड था, ये मैंने इवन बना दिया. ये मेरा ऑड होना चाहिए था, विच इज़ है ऑड. अब मेरे को ये इवन चाहिए. ठीक है, 7 है. और ये लेट्स से इसको कुछ बड़ा करते हैं, 9 करते हैं. ठीक है, अब मैं इसको क्या कर सकता था? आई कुड हैव मेक दिस, लाइक 11 7.
Oh my god, how do I do it? I don't understand. I can make this like either I can make it like 8 or I can make it 6. So if there is a x, I can either increase it x plus 1 or either I can decrease it, right? So x minus 1. So I'll try a maximum. So which is true? Which is true? तो मैं सेम ही बना दूंगा ना. I don't care about the parity. I just want the minimum वो. So my ठीक है. So before doing this, let's just come here, and my maximum should be my mini should be max of what I have. ठीक है. And then I want the minimum to be the maximum. So minimum of maximum or what I have. Either I can like decrease nums of ठीक है I plus 1 or nums of I plus 1 minus 1. Cool. And my maximum should be the minimum. Maximum should be the minimum. I want the minimum to be the maximum and maximum to be the minimum. So maximum to the minimum of maxi and nums of I, and then the same goes to here because I want the maximum to be minimum. So this is like doing minimum of this like sorry. After I do this, I just want maximum to the minimum. Let's just see. I am just decreasing so that I can fit the parity. 2 minus 7. No, this is not right. It's not good. Not getting the answer. By if this is maximum, so I want something. मेरे को मिनिमम जो मिनिमम मेरा चाहिए वो मैक्सिमम चाहिए, तो मेकिंग दिस 8 विल हेल्प. एंड जब वो यहाँ पे आएगा तो वो जो बोलेगा कि जो मेरा अभी तक जो मैक्सिमम है वो मिनिमम है, तो 11 है. इसको बोलेगा इस मैक्सिमम को मिनिमम बनाओ, तो मे बी अभी 9 पे आ जाएगा या 7 पे जाएगा. बोलेगा मिनिमम बनाना है, तो या तो इसको मैं 8 कर सकता हूँ और तो मैं 6 कर सकता हूँ. तो आई ऑब्वियसली डू 6. ओ माई गॉड. So maximum is like 11. I want the minimum. ठीक है. I want the minimum to be the maximum. So it should be minimum of. This should be like maximum. But internally they are like the maximum. 2 5 1 1. Solve this problem, but not this one. It says 3. So minimum possible value. Answer is the minimum possible value of max minus a value and can be obtained by performing zero operation. So either are we considering I plus 1? Maybe I change with 0. Maybe I can change like 0. Maybe maximum is min of mini is min of num plus 1 or nums
0 का -1, ठीक है। मैंने एस ये, या तो मैं इसमें +1 कर दूंगा, या तो मैं मैक्सिमम इज लाइक max of this. Nah, it's not. Nah, it's not happening. It's not happening. I want to solve it भाई. What's my rating? 12,000 है ना, 11,000 के आसपास आएगी, पता नहीं। क्या होगा, आई डोंट अंडरस्टैंड। Oh my god. Guys, the sorry, yeah, the 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 contest is like finished, and we did not do good. I don't understand what's wrong with this. Maybe like the question could be like, why am I always decreasing? Maybe let's say the question is like 3 3 3 3 3 2, and then let's say 2. So how can I solve this? This is like even, this is odd, this is odd. Let's say this is odd. Let's say this is 1. So what I'm trying to do is like decrease this by. So let's say you want to odd, so let's say do minus. So we have 3, then we have 2, and then we have minus. It's odd, odd, odd. What you can do is like 3, then you can do 1, which becomes, which makes it, we have odd. Going to make it, what the fuck. So this is 5, this is 3, ठीक है। So 5, you can make it like, yeah, let decrease, so we can make like 2, then like -1, right? But this still not maximizes these value. Like I could have 2, and this is like 5. What I could have done is like I would have like decreased it, or I could have just done is like make this 4, make it even, which I did. But let's say this is 10. So in, so 10 minus, पहले 9 माइनस 4 होता, इस तरह 10 माइनस 4 हो रहा है, 9 माइनस 3 होता, इस तरह 10 माइनस 4 हो रहा है। नहीं हो पाया ये क्वेश्चन, I could not solve it. I don't know, like let's see the ranking, go for the ranking, contest pay, and then
Just a minute, guys. So I started doing contests just because of this guy. I don't know me. I want you guys to like see how do I. Yep. Just see this. ये डीपी का क्वेश्चन था. I don't think so. What do you guys think? Like, are these guys cheating? I think this guy has. Like, I think like this guy has done the cheating and all because because like the way the co-pilot or the way the code is changed is like few lines beach के and ऐसा. I don't care. By the way, I just want to know his rating because he is like knight and let's just entrant hub आ गया क्या? Oh my god. अरे so Bray is trying to bro did the एक second.
So he has done only three questions, and even in like half an hour, that's it. At like 40 minutes, I did in 14 minutes. I didn't understand. I was mine at my internet hub literally. Let's just check ours, bro. I didn't know in internet hub. Fingers crossed, guys. Fingers crossed. I do care about rating because I couldn't like uh contests. Cool. Maybe live. Live, nothing is live. So past contests, lead code, and we did like bi-weekly 177. View details. Oh my god. Let's just check. Fingers crossed, fingers crossed. Fingers. Oh my god. I'm getting a negative. Bro, I'm getting a negative of like crazy. Crazy way. His rank was literally like oh my god. Like this was easy, but I took so much time in the first question because I got confused in the first question and yeah. Sorted तो मेरे को मिल गया था. I just needed to first part and then I just wanted something with a different frequency. I did not understand the question on time and that's why I am getting going to get -9. New rating is expected rating is 5091. Oh my god. So we are going for 1621. We'll try to get better. By जब तक I'm not able to do third question तब तक I think we are not going to do anything else. We're going to revise everything. As you guys can see, my rating is like 1593 and 38. This was a big jump from 93. Now I'm like stagnant at 1600 because I saw two questions. That's why is it like negative? So getting the ranking is all about how fast you solve the questions. Because I took very much like a lot of time on the first question, and I think like the first question is I hate myself. Why did I like I should have read this multiple times. If we would just distinct pair of x and y from number x is less than y. So when we sort this x definitely becomes less than y. So we pick the choose the pair smallest x possible. So we pick the first and the multipliers with x. This is not possible. ये फालतू का चुतिया लिखा है. This multipliers have x equals. We don't care about this. Then just get the second one. Second y with whoever the frequency like if the frequency is like ये देखो ना you get the first one and then you like what's the frequency and then you just push something else which is like whose frequency is not equal to this and also उससे बढ़ाओ ये तो हो गई ये तो हाँ ये क्या चुतिया मैंने लिखा है if it dot first is greater than ये क्या चुतिया लिखा है मैंने कि obviously this is a map so if जो भी x के बाद आएगा it will be greater than x. This is not needed, bro. This is not needed. And then like you do like this and
I took like so much time in this question, and also I got a penalty. So yeah, fingers crossed we'll do better in the tomorrow's contest. So yeah, let's go. तब तक के लिए चलो मिलते हैं बाकी बाद में. आई हैव सम इम्पोर्टेंट कॉल्स टू कैरी ऑन. ओह सॉरी, मैं तब से यही चला के रखा हूँ. सॉरी. गूगल क्रोम. या सो like I have done 150 questions and 16. इसके ऊपर जंप नहीं आ रहा है. ये कॉन्टेक्स्ट खराब हुआ. आई वॉज एबल टू सॉल्व 3 क्वेश्चंस बट ये नहीं. ये आई वॉज एबल टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस बट आई ज्वाइंड 17 minutes late, so that's why this rating has dropped. We don't care about rating, but we do. Like I don't know. Internet hub is showing that I'll get something like -1, and maybe this rank changes to like 10,000 if cheaters are going to get. When cheaters are going to get out, you're just we are will be on. If cheaters are going to get out, cool, then we'll be able to. We'll be in 10,000 rank, and if we are in 10,000 rank, maybe I'll not get a decrease in my rating. So yeah, whatever it is, we'll meet next in the tomorrow's live, guys. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय. हेल्थ का ध्यान रखो. बाय.